So first of all, let me see your status about your accesses. Okay. So have you got your all access in SAP? Yes, but I didn't try, but we got that message as got that access. You got your access. So you know how to configure in your system and we can proceed. Is it something you want some kind of help? Yes, yes, we need help. Okay. Okay. So what we need to do, what first of all, you have to install it this SAP logon pad. Okay. Okay, This SAP logon pad, once it will be installed in your system, and then you will have this windows, right? In this window, you have to click on this button, new okay, connection, and then go next. And here you will have to fill that details what they have shared with you, right? Like okay, as for HANA or something. Okay, here what would be the application server? It will, and these details will be like this. Okay, okay. as for HANA server. So instances they have said with you 26 or something else. Can you just little, can you check Yeah, and just let me sure, know? sure. Yeah, Hey, hi Sandeep. Yeah, hi Mukesh. 24 is So what I said. it's a 24. Yeah, 24 inch. Hmm. It's a 24, right? yes, 24. What is this? Okay. Hmm. Let me take this. I'll have to go with this because I got my access in 26. I'm not sure Okay, why. Maybe something is different. Can you ask to someone that they can give it to you in 26, 24? How? Let me see. yeah. 24, right? Mm. SAP S4 yeah. And application server. Can you just tell me the IP address if you have something handy? 122 dot 122 dot 176 dot 1176 176 dot 112 one 16. 176 dot 112. It is 112. Yeah, 112, right? And yes, dot. dot 165. Okay, so instance ID is 24 you're talking about, right? Yes, And system ID is A4H. 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 I'm not sure whether I have my access in this or not. No, I do not have the access. So in this case, can you share your screen, I mean, your credentials to me for a moment? Mhm. I will Yeah. reset your So password. user, yeah, user ID is Manasa, capital M, Mansa, MANSA, S, MANSA, right? yes. Mansa, right? And Uh-huh. password One two can three four five six. 1 2 3 4 5 6. Okay, it will ask me to reset. Okay, so you got your uh, okay Capital M, remaining MANSA words. 1 2 3. Yeah, I have not set the capital sorry, MANSA 1 2 3. Let's see. Capital M, okay, MANSA
1, 2, 3, LAN, SA, LP3. Okay, let me see first. Is this the good server or something? 9 records. So these 9 records are 2023 created. All right. Okay. Just little bit checking it, huh? Yeah. Uh, because I got my access is in 26, right? So I want that in same server, I should have my access so that you, when we will start my project, then it will help you to check it out what exactly I did my configuration during the session. So, but I do not have this access in S for 24. I will ask them to create it. But I have to just checking it out whether this server is fine or not. Okay. Yeah, yeah. Tell me something if you have any. No, no. 249. Okay. Let me see more. SC69. Maybe, okay. Do we have any entries over here? No, we do not have entries. So it looks like this server is good. Okay. Okay. I'll have to ask to someone. For you also, it should be 24. Okay. Yeah, yeah, yeah. I will create, I will ask someone, Okay. just a moment. Before, let me go to Amrit. Just hold that. Hey, Amrit. Hello. Amrit, you have given the access to all the candidates on 24 server, but I have no access on 24. And I have checked it. Or should I share the you can take No, no, that is what I'm telling to you. It looks like actually I was trying to see whether as for HANA 24 is good or not. It looks good to me as of now. So what you can do, you can give it to me as for HANA, one user ID and password share with me, right? With Mukesh02. Okay. And one also create the Mukesh01 because Mukesh01, I will use it for the test as a test user because I want to configure the few roles, right? That I need to be checked with the Mukesh01. But in Mukesh02, you can give it to me all accesses. Can you provide me as quickly? all access. SAP all access means there is nothing any roles are actually activated, right? In S4 HANA, we There's all access. I don't have that. I get only all access. Name also second. okay, okay. You can tell him that SAP underscore all access has been given to on 24 access 24 server. There is nothing any problem. Uh, you can just can you quickly give it to me the Mukesh02 and password reset and ID share with me, Yes. right? And ping me on my WhatsApp group, right? Okay, thanks. Sorry, guys. So it looks to me good, right? Uh, as for HANA 24, we will start to working on it, this 24 server. Okay. In this 24 server,
We will start doing this, but before to configure it, I would like you to configure in your all system, because here you will have to also work on the Fury apps, right? But for Fury app, you have to check whether you are able to do it or not. So there is a transactions code UI2 underscore FLP. Okay, then uh, let's see. Right, just open 23, 26. I have this. UI2 underscore FLP slash UI2. Okay, so here if you will go, then you will see this is the login, right? In Fury app, right? But for doing that, you will have to make the entry like this, what I'm showing to you, right? You will have to go to run, Okay. and in run, you have to put drivers, and then go to your etc folder, and there is a host file. Okay. So don't open this host file. You have to get copy this and place it in your desktop or somewhere, right? Let's suppose I'm pasting it here. Paste. Okay. So it's already there. Here, what you need to do, you open this file with a notepad, right? Just one. It will be open here. And here you need to put this details just at the bottom of this. Okay. Like this. You have to put these Those, details. those details you are copying or you have pasted, Mukesh? I have already done it. That's why I was able to open it here, right? Okay. Here, this page will be open only if that entries will be available in the host file. Okay. Okay, so you understood what exactly needs to be done. First of all, you have to open it in run, Yeah. right? Drivers, in drivers, etc, and this will be done into your personal system, right? Where you should have the admin right. Then it will allow etc folder. Under this etc folder, there is a host file. Copy this host file, paste it in your desktop or somewhere. Open that file in Notepad, and then enter this IP details and S for HANA 2023.sapserver.com. Okay. Once you will be able to do that, then you will be able to log in into the S for HANA Fury apps, right? Here you will be able to open. So if I want to go with that, MANSA Mansa, and your password I said capital MAN SA 123. Okay.
You can change later on. Yeah. Mm. User is only capital M, remaining all small. M, yeah, MANSA. Yeah. It's fine, right? User ID is fine, right? Yes. And then let's say at the rate 123 or 123. Set. You said only 1 to 3. No. So Small A and MANSA 123. small A and SA in user. Sorry. Capital M, capital M, MANSA. remaining all small. No, no, no. User ID is fine. Okay, fine. Maybe MANASA 123. NASA. I'll give it a 123. Just set it this password. Oh my God. Anyway, the same password what you are using it here, same you will use it. Mm-hmm. Same you, MANSA. Same I will given this. Why this is? Yeah, you said same, right? M A N S A 1 to 3. Can you just try with your user ID and password? We'll see. Need to install that. I have opened the MAN first file with the notepad, so it is showing something. MANSA 123. I just said this. Mm-hmm. Internal user MANSA and MANSA 123. Same I have given it. Why it is not opening in area. Anyways, so let also the password is MANSA 123. I have set it right. Yeah. We go to SEO 01. I don't think that we will have this access. Yes. Okay, I'll figure it out once it will be done, right? Then I'll figure it out first. So let's go and we'll start to working on it. Mm. First of all, once it will be happen, then your GUI and this is what I shown you will be open into the web browser, right? That is we are calling the uh, Fury app. Okay, you will get your Fury app. Let me go and show you the same in 2020. In this 24 where I have this access. I'm logging out. Okay, from your user ID. I have set your user ID MA capital MANSA 123. Just check it out. If it is not working, then we will set it. Okay. And let me go and where I have this access, right? Let me go over this in 26. Okay. So here we actually, it looks like this is what we calling GUI, right? Graphical user interfaces. So what I will do, I'm sharing you one sheet. This is Google Sheet, right? And here we have ECC. This is for the different batch, but that here in this you will get S4 HANA, and whatever I am writing it here, you will get it update, right? So I'll share with you this sheet to everyone. Okay. Just give it to me your user ID so that
You will get it your access, what the things we will do it. You will get everything. So can you just give it to me your user ID one by one, please? This one, I mean, mail ID. Yeah, yeah, yeah. I'm sharing Okay. this Google Sheet to with you all, right? Because Okay. I will write it down, the concepts, whatever the things I'm writing it, it will be available for you here, right? Just give it Okay. to me, right? Bijam. MANSA, No, no. Bijam Manasa. BIJJAM. VIJJAM, B for ball. BI, sorry, BIAM, JJAM. MANASA. Double M. uh, double A MAN, N A N A S A. MAN, Yeah, at okay, Gmail. at the rate gmail.com, right? Yes. Gmail.com. Okay, that's fine. All right. And another one, offering you have your, you can just share with me or something you can write it here. That's fine. Bro, I've shared in this chat. You check. Okay, great, great. All right. Any other one? Offering, can you just share with me? Okay, that's fine. You can manage it, right? You can give this access Yeah, to we can give her. rest Yeah. of the team. All right, right. So here I'm sharing this with you all. We will do it here as for HANA, right? And we will start working on it. So let me go and will tell you what exactly ECC and S/4HANA, a little bit the concept, right? So SAP, here in SAP, it was actually first created with the architecture of two-tier of architecture, right? So initially it was created with two-tier architecture, but later on in 1991 or something, right? Here it was created three-tier architecture. Okay. What does it mean, three-tier architecture? There is three layers you can understand. First one is called presentation layer. Okay. Presentation layer. Yeah. Second one is called application layer. Right. Mm. And third one is called it database. Right. So when it was started, at that time it was only two layers, application layer and then database, right? But later on, globally, when it is accepted SAP, when they have introduced presentation layer, application layer, and database. So it was there about 1991 or something. And this layer was actually having, we are calling ERP, Enterprises Resource Planning. In this ERP, what exactly ERP means? Enterprise Resource Planning. It means it is the close integrations between the different layers, right? Modules. So what are the different modules? This could be SD, this could be SD, EP, right? HR, FI, CO, right? Yeah. And and other also like CS, like kind of this thing. So these are all the different modules are actually integrated, right? But over these modules, it is collaborated with ABAP. ABAP means something the technical, which is the common platform, you can say. It is the
common platform, and here we have the different kind of SDM and PP, and all of them are in the architecture of the web program. So in the web is the another modules which is collaborated in all the modules, right? So wherever we are required to such kind of enhancement, then we are approaching to the wrapper or technical guys, we can say. So these are all the modules will have their own individual experts. Like we are going to be expert in SD. In a similar way, we also have the experts in MM. We will also have the some experts in PPHR, finance. Everyone will be the in the same areas of expertise in different modules, right? So in when the SAP R3 was introduced and these three layers, so all these applications is actually built on their uh, different transactions. It comes under the application layer. But what exactly the presentation layer? So presentation layer is something that the screen of wherever we are actually interacting it. Okay. So where we are putting these things, our command, or we are giving some kind of input in the layer that we are calling the presentation layer, right? So let's suppose if I am opening it here, I'm creating my sales order 3801. This is the one transaction code for creating the sales order. Okay. So here, this layer, what we can see it, that is we can tell this is presentation layer. Okay. And this presentation layer was there in ECC. Majorly, they were working on the graphical user interfaces. Okay, so this is the graphical user interfaces. So here, presentation layer is generally they were using it GUI, graphical user interfaces, right? And applications layer is the layer where we are actually interacting with the applications. So what is the application here? So here my application is sales order. So what we are trying to do it here, right? So the informations which we will create or something in the we are changing it, that is relevant for the sales document. So it's an application layer, and that applications layer is actually sales and distributions related, right? This Okay. now it is clear what is exactly the application layer. Applications layer where all the modules will have the different applications, like SD modules have different applications, MM modules will have the different applications. Similar kind of all these are different kind of the applications. And in this applications layer, what we are saving the data that will go and save it into the database. Okay, Okay. so GUI we were using it and till now, and that we were using in ECC. So we are calling ECC also Enterprises Core Component. Okay. So these are all the users who are working on the ECC. They are working in this system since last 30, 40 years, right? Hmm. These are all working since last 30, 40 years. And all of a sudden you cannot say, hey, because you are using it SAP now, this is my new module, new way of design, you have to accept it. So business, are they going to accept it Are they going to accept easily? it? Easily they will not accept it, right? Hmm. So here, in this case, they are introducing S4 HANA, but in S4 HANA, because they wanted to know that no one will accept at once S4 HANA, right? They have, because they are using it and they are very used to in this ECC system since long 30, 40 years, they are practicing it. So they would like to move the applications in such a way that it would be very faster, will give the response very soon, and it will be look and feel would be very similar kind of the ECC. Okay. But
on the top of it, on the top of it, it is also giving the leverages that you can do the transactions in some kind of the Fury apps. So that is the beauty of the S4 HANA. But most of the things, what they have done, they were doing it in ECC. It's not completely, it's not changed completely, right? So they have just redefined or something, the features they have added it in S4 HANA. Okay. So here in S4 HANA, this is also the one of the platform where the Fiori apps will be open. And then let me also you here. Uh, we got this and we'll try to open it my right. So these Fiori apps is not just open it into the browser, but it can be open from different like a tab or something from the mobile. So these are all the tiles are there. Okay. Mm. And this tiles is actually opening it into their devices and they can interact very similar kind of things, right? So here, see, all these things are given to me the roles of finance, not as a like a sales and distributions, right? That's why I have asked that they will provide me one user ID, another user ID, so that I will configure these things according to the sales and distributions, Okay. right? So here, if you open it, let me go to open, let's suppose VF01. Is it something that there or not? Let me see. Here we have also the some kind of leverages that we can open the screen, very similar kind of what exactly it is opening it in GUI. Okay, because these features will give you the leverages. You all are comfortable in English, or I can also use the Hindi. Just let me know because uh, my way of what teaching is something that I wanted to know. Everyone should be in some in a one page, right? So just let me know, right? If you are comfortable in English, Hindi, whatever uh, you can say accordingly, I will use it. Yeah, English is okay for us, All Mukesh. right. Okay. 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 That's fine. So in SAP Fiori apps now you getting what the things are there in SAP Fiori apps, right? But here I at 301 the see they have not configured actually like a sales transactions, right? Manage bank and everything are continue. Create purchase order advance. It's there. Let me see here you can see create purchase order, right? Now I'll open this in GUI ME21 and just compare these things in GUI and in Fiori apps. Why I'm telling to you, you can see it's a similar, right? It's a, it's a similar, right? Anything, do you see the differences here? This is S4 HANA. Okay. This is S4 HANA, I'm in Fiori.
And this one is also in S4 HANA, but it is in GUI, right? Okay. GUI means graphical user interfaces. Okay. I have given my transactions ME21N, and in Fiori app, I have opened it, create purchase order. It's opening in this app. Right? It's a very much similar. If you can see it, header, now I'll open it here. Do you see? Nothing is differences. Do you see? It's a similar. Why I'm telling to you this is very similar. It is because in ECC it was look like this, same. And same has been migrated into the S4 HANA so that they will be looks and feel would be the same as like what they were working on last 40 years, 30 years, right? So this is what exactly the ECC, what they are practicing it. Same they have migrated into the S4, but they have something very much interactive way and it is given into the Fiori app. Okay. So all the features, if you know the ECC, then you will get more understanding. You will be more convenient to understanding in S4 HANA. But if you're not knowing the ECC, it doesn't mean that it is required the ECC knowledge. No, it's not required much. But yes, prerequisites it's required if you know that it's better. But if you do not have the ECC knowledge, we can do it the same way what we were doing it in ECC in a similar way in S4HANA. So why I'm telling this to you? Because I do not know whether you will get the chance to work on ECC or in S4HANA. In both situations, how you can differentiate or what the things are very common that you can understand. So from the configurations perspective, there is nothing much differences. It's the similar way that what we were doing it in ACC, in a similar way, we can also do it in S4HANA. Okay. So this is all about the differences, what I was trying to understand you that in S4HANA, if we are also getting some kind of add-on features, looks and feel is good. Their response for interacting it from the application server to getting the data, it is more quickly in manner. That is the features with S4HANA. Okay. For the theoretical part, you can also learn with the different sources. But now I am coming to the O2C cycle, right? I'm coming to the O2C cycle. O2C cycle. Anybody knows what exactly the O2C cycle? What is O2C? O2C, what does it mean? Okay, no. So O2C cycle, we are calling order to cash. Order to cash. Okay. In SAP SD, we normally calling order to cash O2C cycle. But in MM, we are calling uh, P2P. What we are calling? P2P. In SD, we are calling P2P. Means procure to pay. Procure to pay. Okay. In P2P. So this is the MM model. There is a different cycle. So this cycle is starting from the order. Until then, we are doing the delivery, billing, and then once the billing will done, then the cash will be receiving from the customer. So that whole cycle we are calling O2C in SD, but in MM we are calling P2P, procure to pay in normal words, right? So I'm not going to tell you much more about in MM, but we are just focusing on the O2C cycle. Okay. So let's go. What exactly is O2C cycle?
So O2C cycle, and in somewhere we are also calling MP2C. MP2C means marketing, planning to cash. Okay. So that is also the SD module. But here and in this cycle, there is little bit differences. What is the differences here? We will understand these things, right? O2C cycle will start from order and then it will go to delivery and then it will go to billing, right? Here in MP2C, we are doing kind of marketing planning, marketing planning, marketing planning campaign on marketing planning campaign, marketing planning campaigning. On then we are certain kind of inquiry, right? Inquiry. And then we can also have the quotation, and then we can also have the sales order, and then delivery, and then billing, right? So this is in a normal in project normally they are saying O2C or MP2C. But if someone is saying to you O2C, then you should understand what they exactly telling. But if they are talking about the marketing planning, it means marketing planning, campaign inquiry, quotation, sales order, delivery. So here to here it is O2C. But if we will start it here or something from here, it is not necessary that everything will be start from here. It can be start from the here also. Sales order, delivery and billing. That is also they will say MP2C team or O2C team. Okay. But if they are talking about input MP2C, that means something it is inquiry or campaign or planning start and will go like this. Now, what is the differences here in between this? What is the major differences here? Here, the major differences is that at what stage my prospects will become the customer. Okay. So when let's suppose I want to purchase my new laptop. Okay. I have just set my I have put my some queries that I'm interested for this. So I went into the site and given my details like my name and the product for which I am interested. Okay. For this, they will what they will do? They will interact with you and they will create the one document like kind of inquiry. But at this inquiry stage, I am not the customer, right? We will have some kind of conversations with the company guys. They will say, okay, sir, you shown your interest on this product. How may I help you? Then I will say, can you share with me the configurations and the quotations for that product? Then what they will do? They will share the some kind of quotation, okay, or something that quotations they will give it to you. So one document they will create as a quotation. After that, creating the quotation, then I will say I'm okay with that. I'll go and will purchase this laptop from your company. Till here, I was the prospect, right? Till here, I was not the customer. I was prospects. But now, as the moment I have ordered the product, right? Then I become the customer. And once the customer will become, then sales order, delivery, and these all things will be
initiated, right? So here, in order to cash, normally we know the customer, but here in MP2C, the first interactions may be prospects, but we will convert these prospects further into the customer once the order is confirmed, right? So here you can understand, you are getting me what is O2C, what is LP2C, because you have to familiarize with some kind of terminology, right? Then you will be understand what exactly we will try to do it. I'm just giving you some kind of the brief so that we will start it and you will start your way of thinking will start what is the differentiate and how it is related to this, because in S4 HANA there is a concept of business partner, right? But in ECC we have the concept, uh, we started from the order at the time we know that this is completely it's not the customer, it's not the prospect, this one is particular customer. It could be the my B2B customer or it could be the business to customer kind of things, but we are sure on this at the order stage when the prospects is already creating into the customer, then we will start my O2C cycle. You can understand it that, right? But in MP2C, it doesn't matter that we will start interacting directly with customer. It can be directly interacting with the prospects only. And then in stages further, we decided, okay, now this prospects here is now becoming my customer. And then we will start punching and creating the sales order and deliveries and billings like that. Okay. So now this is what the differences you understood what is means by the OTC and what is MP2C. Is there something doubts? Please raise your voice. So what Hello. actually we will use which term? I mean, which term we will use order to cash or else MP2C for And our yeah, work? in the normal languages, they will say O2C team or something. O2C means order to cash, means SD team, or they can also tell SDT. Mhm. Okay. Let's see what exactly O2C means. Okay. O2C means how this is exactly working on it and what the things we will start. So what we will do, I will tell you what exactly the O2C, but in some terminologies, they can say MP2C, but it doesn't mean that it will start from the marketing planning campaign inquiry like that. It can be directly start from the sold to sales order delivery and billing like that. Okay. So if I'm talking about the O2C, it means something the order will be created. That order could be sales order. Okay. And then delivery will be created. Okay. During this delivery, we also have some kind of the actionable things inside the plant, right? So within the plant or in warehouse, this delivery would be picking activities because material has to be picked up, right? And then picking, and then we will have packing because this material has to be packed, right? Because before to dispatching it, we will have to pack it, packing, right? Picking, packing. Once the picking, packing will be happen, then what will happen? Then we will have PGI. Once the packing will happen, then it will turn some PGI. That what we are calling post good issues. I will show you in the system, right? I will show you these things in the system so that you will be understood. Okay.
So you will be understand what exactly I mean. So PGI will be happen. This PGI means post good issues. What does it mean? Post good issues. Post good issues. Okay. Once the PGI post good issues will be happen, then we will start the next steps, billing. Okay. Once the billing will created, then our work is to be generating the accounting document. Accounting document. Okay. So till here, the accounting document will be generated. Then our O2C cycle will be completed. Okay. Till the O2C cycle will be completed. Okay. So O2C cycle will start. It's not necessary that it will start every time with sales order. It can be start from the quotation, right? Before it can be start the quotation and then sales order. Once the sales order will created, then delivery will be happen. Then picking would be happen, packing, BGI, billing, and then accounting posting is will be done. Okay. So here, these things is called the O2C. But during this delivery, we also have these activities, kind of these things in warehouse. Okay. So these activities can be broadly done into the warehouse. And for doing that, there could be integrated with a different server. That server could be EWM, extended warehouse. Okay. So this extended warehouse is also the another module where all the deliveries related things, picking, packing, will be performed into the EWM. Now, here in SAP, these things can be managed, but it will be managed at the inventory level. Now, you might have the question, what is inventory level? And another thing is the warehouse management. Warehouse managed level or inventory level. Let's understand what is inventory level and what is warehouse managed level. Okay. I will show you one transactions which I have created my project. Then you will have relate these things in a better way. But first, let's understand about in delivery level, these activities will be done from the plant side, right? So in plant, there inside could be the some kind of godown. Under the godown, there is a some kind of the peoples who is actually working inside the godown. They are doing the activities like picking. So the person who is doing this picking, you can call them picker. Okay. So what they will do, they will pick it, the articles or materials from the particular location and then packing it. And once the packing will be done, they will load it into truck and PGI will be done. So the material will be dispatched from the plant. So here in this stage, material will be dispatched from the plant, right? It means it is out for delivery. Delivery has been completed. But at the time when the truck was uh, going from the godown, they should have certain kind of the document along with them, right? That document they are which they are calling it in the in the local language BILT or something. But BILT is nothing else like a billing document. Okay, so they're keeping their billing document along with the truck,
and they are also keeping that this billing document and going forward for delivery, deliver to this to the customer. Once that once the delivery is done at the customer's end, then the accounting will be generated. Okay, I mean, then once the billing should be done, then accounting will be generated, and against this accounting, we will see, okay, ये रेवेन्यू अकाउंट में मुझे इतना रेवेन्यू आया, कस्टमर के अकाउंट में इतना आया, ताकि जीएल अकाउंट के हम बाइफरकेशंस में हम ये निकाल पाए कि कितना अमाउंट जो है वो हमारे रेवेन्यूज अकाउंट को हिट कर रहा है, और कितना अमाउंट जो है वो मुझे कस्टमर अकाउंट से लेने हैं। तो ये सब सारे जो चीजें हैं वो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करता है। Once the accounting document will be generated, against this accounting document, cash will be received by the finance guy. तो ये पूरा का पूरा साइकिल यहाँ से यहाँ तक करने पर हमारा O2C साइकिल कंप्लीट होता है। ठीक है, तो जो चीज हमें यहाँ करने हैं, we can also use this in GUI. We can also do this the same way in GUI, right? Through VA01 or something, right? VA01 से हम यहाँ बनाएंगे। अभी हम ऐसा करते हैं कि एक ईसीसी में आपको हम दिखाते हैं, बिल्कुल सेम है। ईसीसी मैं अभी लॉगिन कर रहा हूँ, दिस वन इज एस फॉर हंड्रेड, राइट। इन ईसीसी में मेरे पास जो प्रोजेक्ट अभी मैंने बनाया है, प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट को मैं आपको दिखाता हूँ और आपको ये सिखाता हूँ कि सेल्स ऑर्डर कैसे बनता है। पहले आप लोग स्टार्टिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये एक्टिविटीज एक्चुअली एंड यूजर का है। लेकिन जब तक आप ये नहीं समझ पाओगे कि एंड यूजर करते क्या है, तब तक आप ये नहीं समझ पाओ कि एग्जैक्टली हमें एज अ कंसल्टेंट या एज अ फंक्शनल कंसल्टेंट क्या हमें करना है। ठीक है, तो उसकी हम लोग ब्रीफ आपको थोड़ा सा दिखाने चाह रहे हैं। जो ईसीसी में मेरे पास कुछ डेटा है जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ओके, ये ईसीसी है, देयर इज नथिंग एनी डिफरेंसेस, एंड दिस वन इज एस फॉर हाना, यू कैन सी एस फॉर हाना, and another one is ECC. This one is ECC. This is ECC. Okay. I'm going VA01. Right. Do you see any differences here? ज्यादा डिफरेंसेस कुछ है ही नहीं, है ना। क्रिएट No. सेल्स ऑर्डर है, यहाँ क्रिएट सेल्स डॉक्यूमेंट है। अब मैं यहाँ पर इस पे क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट है नहीं। ये जो चीजें मैं दिखाना चाह रहा हूँ, हमारे पास डेटा भी तो होना चाहिए। वो चीज यहाँ पे है नहीं, वो हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे एस फॉर होगा में। लेकिन जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड है, मैं उसके थ्रू आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बनाया है। मेरा मेरा जो कंपनी है, उस कंपनी का नाम है हायर, HIER, हायर। ओके, ये इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है, और इसका बिजनेस जो है वो इंडिया में है। इसका एक पर्टिकुलर कंपनी कोड है जो इंडिया में है। इसके प्लांट दो जगह है, एक है गाजियाबाद में, दूसरा है बेलारी कर्नाटका में। ठीक है, और इसका सेल्स ऑर्गेनाइजेशन हमने HIR ही रखा है। तो यहाँ पे जो भी हम करने जा रहे हैं, ये सब ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस किया हुआ है, और ये कॉन्फ़िगरेशन जो किया हुआ है, यही एक फंक्शनल कंसल्टेंट का काम होता है जो आप सीखने जा रहे हैं। अभी जो मैं करने जा रहा हूँ, जैसे वो चीज आपने डेवलप कर लिया, और डेवलप करने के बाद जो एंड यूजर या क्लाइंट जो आपके हैं, वो एग्जैक्टली अपने बिजनेस को कैसे रन करेंगे, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ताकि आप इसको देखने के बाद समझ जाओगे कि एग्जैक्टली आप O2C साइकिल का मतलब क्या होता है, और O2C साइकिल रन कैसे होता है, ताकि सिमिलर वे हम लोग एस फॉर हाना में वैसे ही कर पाए। ठीक है, नाउ इट इज क्लियर टू यू व्हाट एग्जैक्टली वी आर ट्राइंग टू डू इट हियर। हम जो यहाँ बनाने जा रहे हैं, अपने ही प्रोजेक्ट का बनाया जा रहा है। दिस ऑल थिंग्स इज कॉन्फ़िगर्ड बाय द फंक्शनल कंसल्टेंट, जो मैंने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है,
हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है HIER, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है मेरा AC, हायर कंपनी है, इलेक्ट्रॉनिक कंपनी है जो सिर्फ डील करती है एयर कंडीशनर में। ओके। और एयर कंडीशनर में डील करती है, इसके दो डिविजन्स है मैंने रखा हुआ है, एक स्प्लिट और दूसरा विंडो। लेकिन मैंने यहाँ पे 0 0 डाल रहा हूँ, इसका क्या वजह है वो हम लोग आगे चल के जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन शुरू करेंगे तब मैं आप अच्छे से क्लियर करूंगा। और सेम सिनेरियोज आई विल ट्राई टू क्रिएट इट हियर। ठीक है, HIR ही नाम दे देंगे। और वैसे ही एक नया प्रोजेक्ट हम लोग S4 में करने वाले हैं। तो जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया, एंटर मारा, इट इज आस्किंग फॉर मी टू पुट द सेल्स ऑर्डर सोल्ड टू पार्टी। तो हमारा सोल्ड टू पार्टी भी हमने बनाया है। ये सोल्ड टू पार्टी जो है वो हमने जो किया हुआ है, तो इसमें एक अंधेरी ईस्ट में हमारा कोई कस्टमर है। ठीक है, अंधेरी ईस्ट का एक कस्टमर है जो डी मार्ट या एच मार्ट या कुछ भी है। ठीक है, तो ये एक सोल्ड टू पार्टी है, इसके डिटेल्स को मैंने डाला। यहाँ पे हमने कुछ भी ऑर्डर डाल दिया, मान लो P00001 करके परचेज ऑर्डर नंबर है। ये परचेज ऑर्डर नंबर क्या होता है, तो जो कस्टमर मान लो आपका है, डी मार्ट है या कुछ और भी कोई कस्टमर है या इलेक्ट्रॉनिक कोई कस्टमर है, राइट। तो उन्होंने आपको एक ऑर्डर दिया, तो उनके लेवल पे वो कहीं मेंटेन कर रहे हैं ना कि ये मेरा परचेज ऑर्डर नंबर है, इसकी डिलीवरी कब आएगी, तो उन्होंने एक नोट किया हुआ है, एक परचेज ऑर्डर नंबर, एंड दिस इज फ्री फील्ड विच आई कैन गिव इट द सेम, सो दैट आई कैन ट्रैक इट लेटर ऑन कि ये मेरा परचेज ऑर्डर जो है उसमें क्या क्या डिटेल था। तो हम अब ये सेल्स ऑर्डर बनाने चाह रहे हैं। ठीक है, सेल्स ऑर्डर बनाने के लिए हमें मटेरियल चाहिए। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मटेरियल डाला, इसकी क्वांटिटी डाला। ठीक है, ये क्वांटिटी डाल दिया। इसका मैंने प्राइस अभी ये मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो हमने मैनुअली प्राइस डाल दिया। तो ये हमारा सपोज 43,000 का है मान। ठीक है, हमने यहाँ डिटेल्स वगैरह डाल दिया। ये सब डिटेल्स कहाँ से उठ कर आ रहा है, क्या लॉजिक है, ये सब सब हम लोग सीखने वाले हैं। हमारा ये जो कंपनी है, लेट्स गो टू सी, मेरा ये HIR स्टैंडर्ड सेल्स ऑर्डर है, जो उसके एंड यूजर पूरे दिन सेल्स ऑर्डर जब भी बनाना होगा उनको ये ऐसे ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, मेरा सेल्स एरिया है HIR, AC मेरा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एयर कंडीशनर, और 0 0 मेरा क्रॉस डिविजन लिया हुआ है। हम बिलिंग डॉक्यूमेंट में जाते हैं, HIR मेरा कंपनी कोड है। यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं, सोल टू पार्टी, बिल टू पार्टी, पेयर और शिप टू पार्टी। ये सब सभी मेरे कस्टमर है, लेकिन इन कस्टमर का ना मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट होता है इन SAP में। तो वो मीनिंग क्या होता है, सोल टू पार्टी होता है जिसने ऑर्डर किया। ठीक है, हु इज फॉर whom we are placing the order is called sold to party, where we would like to ship this material in what address that we are calling ship to party। जिस जगह पे मुझे ये मटेरियल पहुंचाने हैं वो हमारा शिप टू पार्टी कहलाता है। जहां पर हम अपना बिलिंग इनवॉइसेस भेजेंगे वो हमारा बिल टू पार्टी कहलाता है। और जो हमें पेमेंट करेगा वो हमारा पेयर कहलाता है। तो हमारा जो ये कस्टमर 16000100, ये सेम ही है जिसने प्लेस किया, ये सेम ही है जहाँ मटेरियल पहुंचना है, ये सेम ही है जहाँ पे मेरा बिलिंग जाएगा, और ये सेम ही है जो हमें बिलिंग पेमेंट करेगी। बट ये जरूरी नहीं कि जो हमारा सोल टू पार्टी हो सेम हमारा शिप टू पार्टी भी वही हो, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि हमारा मटेरियल किसी और ने प्लेस किया, ये मटेरियल कहीं और स्विच होना है, वो शिप टू पार्टी होगा। ये मटेरियल का पेमेंट कहीं और से आएगा, कोई कॉर्पोरेट ऑफिस से आएगा, तो वो मेरा पेयर हो जाएगा।
ये इनवॉइस हमें कहीं और भेजना है तो वो हमारा बिल टू पार्टी हो जाएगा। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज है, ये हम लोग सभी सीखेंगे। लेकिन अभी हम लोग क्या सीख रहे हैं कि ओ टू सी साइकिल एग्जैक्टली कैसा होता है। हमारे पास ये लाइन आइटम है, ये मटेरियल है हमारे पास, राइट। ये मटेरियल में हमारा डिटरमाइंड हो रहा है प्लांट G Z 00, यानी गाजियाबाद वाला प्लांट। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं कि इस मटेरियल का गाजियाबाद प्लांट में कितना स्टॉक है। तो उसके लिए MMB ट्रांजेक्शन है। सेम वी विल यूज इट इन S4 में भी हम यही करेंगे। ठीक है। जो अभी ये G Z 00 इसमें स्टॉक कितना है तो वी विल सी। तो 1499, यानी 1500 था, एक फिनिश हुआ, 1499 अभी स्टॉक है इस मटेरियल का इस प्लांट के अंदर, राइट। नाउ ये प्लांट निकल गया यहाँ पे, और सब सारे डिटेल्स ये सब सब हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, प्लांट भी हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे। सब कुछ हम लोग यहाँ पे अपना कॉन्फ़िगर करेंगे ताकि एंड यूजर जो होंगे हमारे, जो क्लाइंट के हैं, वो इस पर अपना बिजनेस रन कर सके। इनके डिटेलिंग, कहाँ से डिटेल्स आ रहे हैं, मास्टर डाटा मेंटेनेंस, एवरीथिंग वी विल लर्न इट। नाउ I'll have to check whether this document is complete or not. So I'll check it out. So this document is complete. I'm saving this my document. So sales order is created. Let's see. This is my sales order created, right? So this is what I have my sales order number. अभी ये सेल्स ऑर्डर नंबर इस नंबर से जनरेट हुआ, किसी और नंबर से जनरेट होना चाहिए, एवरीथिंग वी विल सी एंड वी विल कॉन्फ़िगर दैट थिंग्स। ठीक है। अभी जस्ट मैं आपको लुक एंड फील की का बता रहा हूँ, ताकि आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस करो इसका। ठीक है। यहाँ पे आप जब सेल्स ऑर्डर बना लिए, तो आप यहाँ पर डिलीवरी बनाओगे, तो डिलीवरी का अलग ट्रांजेक्शन होता है जो VL01N होता है। इसको आप यहाँ से भी क्लिक करोगे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे मटेरियल को, तो इसका शेड्यूल लाइन बता रहा है 14 तारीख को ये डिलीवर होगा। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे जाओगे और डिलीवर करोगे, तो ये अब देखो VL01N, अब ये डिलीवरी वाला स्क्रीन खुल गया। दिस डिलीवरी एक्टिविटीज विल बी डन बाय द लॉजिस्टिक गाइड्स। सेल्स ऑर्डर जो एक्टिविटीज कर रहे थे, उसको करने वाला कोई अलग होगा, इसको सेल्स रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं, या कॉन्टैक्ट पर्सन दे में पिक पंचिंग देयर ऑर्डर, और होल डे वो वही सेल्स ऑर्डर ही बनाते रहे, राइट। उसी तरीके से लॉजिस्टिक्स पार्ट में जो हमारा डिलीवरी बनेगा, डिलीवरी बन जाएगा। डिलीवरी में हम लोग क्या कर रहे हैं, तो पिकिंग कर रहे हैं। ठीक है। तो पिकिंग करने के लिए हमने यहाँ पे पिक्ड क्वांटिटी डाला, 1 क्वांटिटी पिक। क्योंकि यहाँ पे मेरा वेयर हाउस लगा हुआ नहीं है, वेयर हाउस नंबर नहीं है, तो ये हम लोग इन्वेंट्री लेवल पे मेंटेन कर रहे हैं। अब आते हैं हम कि वेयर हाउस होगा तब क्या होगा, और जब नहीं होगा तब क्या होगा। तो ये जो हम यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं लीन वेयर हाउस। ये पिकिंग जो कर रहे हैं, ये हम लोग यूज कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोल रहे हैं लीन वेयर हाउस। ओके। और एक होता है कंप्लीट वेयर हाउस। अब लीन वेयर हाउस और कंप्लीट वेयर हाउस में क्या फर्क है? तो फर्क ये है कि जैसे मानो आपको, आपने क्या किया कि एक रूम है, और वहां पर वो आपका रूम जो है वो एक तरीके से आपने डंपिंग यार्ड बना रखा है। ठीक है। जैसे मानो सपोज आपको इस कमरे से एक सामान निकालना है, मान लो एक कोई पर्टिकुलर क्लोथ निकालना है। आपको पता है कि इस कमरे में डला हुआ है, तो मुझे ढूंढना पड़ेगा और मैं ढूंढ के निकालू, राइट। तो ये लीन वेयर हाउस। अगर हम इस कमरे के अंदर पर्टिकुलर एक रैक बनाए, इस रैक के अंदर हम एक स्टोरेज टाइप बनाए, बीन बनाए, और बीन का लेवलिंग दे कि ये पर्टिकुलर बीन है, और उस बीन में हम अपना सामान रखें, और उस लेवल पे अगर हम इन्वेंट्री मेंटेन कर रहे हैं, तो ये कहलाता है कंप्लीट वेयर हाउस। ठीक है।
लीन वेयर हाउस और कंप्लीट वेयर हाउस में क्या फर्क है, ये थोड़ा सा क्लियर हो रहा है? आप लोग क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड. इफ यू हैव समथिंग, जस्ट इन बिटवीन इंटरप्ट मी एंड आस्क मी. ठीक Sure, है, तो Mukesh. आप. As of now, just this is clear for us. But so where we are getting the order IDs and all these things, so we have to अभी. learn, right? Yeah. राइट, राइट. तो अभी मैं आपको मैं बता दूंगा S4 में अगर कोई डाटा इस तरीके से जिसपे आप लोग, एटलीस्ट मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना हैंड्स ऑन करना शुरू करो, राइट? सेल्स ऑर्डर कैसे बनता है, क्योंकि पहले आपको ये सब ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी क्लाइंट को. जो एंड यूजर जिसके लिए आप डेवलप करोगे ना, उनको आप ये ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा. इट्स नॉट जस्ट दैट कि आपने कॉन्फ़िगर कर दिया और ये अभी जो मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली उनके लिए है जो ये बिजनेस रन करेंगे. लेकिन मेरे लिए हम ये प्रोसेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं अपना टेस्टिंग कर रहा हूँ कि मैंने जो डेवलप किया वेदर इट इज वर्किंग फाइन और नॉट. ठीक है. तो मैं एस फॉर हाना में वो डेटा देखता हूँ कि किसके साथ आप थोड़ा खेल सकते हो. तो अभी आप सेल्स ऑर्डर में बनाना सीखिए, और ये सब मैं आपको बताऊंगा. लेकिन द वे विच आई सोन यू, इन अ सिमिलर वे यू कैन स्टार्ट टू वर्किंग ऑन इट. तो अभी ओ टू सी साइकिल में हम लोग डिलीवरी कर रहे हैं. डिलीवरी के अंदर हमने जो ये पिकिंग किया है और वन क्वांटिटी डाला है, ये हमने लीन वेयर हाउस का काम किया है. मतलब जस्ट हम रैंडमली उस कमरे में गए और एक क्वांटिटी उठा ली. Mm. लेकिन अगर कंप्लीट वेयर हाउस होगा तो हमें इसके साथ एक और पैरेलली प्रोसेस चलता है जिसमें आपको ट्रांसफर ऑर्डर बनाने पड़ते हैं. वो ट्रांसफर ऑर्डर से आपका पिकिंग लिस्ट बनता है. वो पिकिंग लिस्ट को लेकर पिकर जाता है और वो बीन के पास जाकर देखता है कि इस बीन में ये ठीक लोकेशन में है और इस बीन में दो मटेरियल पड़ा हुआ है, तो एक मटेरियल को निकाल. तो वो कंप्लीटली वेयर हाउस होता है. और वो वेयर हाउस को और भी काफी एक्सटेंसिवली वे में मैनेज किया जाता है, तो वो ईडब्ल्यूएम में होता है. तो ईडब्ल्यूएम का भी इंटीग्रेशन होते हैं S4 से. ईडब्ल्यूएम का इंटीग्रेशन भी होता है ईसीसी से. ईडब्ल्यूएम में क्या होता है कि ईडब्ल्यूएम में बहुत ही माइक्रो लेवल पे मैनेज होता है. जैसे वहाँ पीकर है, 5 पीकर है. 5 पीकर में पूरे कंटिन्यूअसली 24/7 काम होता है, राइट? लेकिन कोई पीकर का टाइमिंग होगा 8 घंटे, तो मंडे को वो इतने टाइम में रहेगा. दूसरा पीकर जो है वो इतने टाइम से इतना टाइम में रहेगा. ठीक है, तो वो एक माइक्रो लेवल पे मैनेज होगा. जब आप डिलीवरी बना रहे हो तो पर्टिकुलर पीकर नहीं दिखाएगा जो इस समय में अभी ऑफ है, अभी उसका ऑफ वर्किंग आवर्स है. ठीक है, तो वो पीकर नहीं सिलेक्ट होगा. तो वो उस लेवल पे जो मैनेज होता है वो ईडब्ल्यूएम साइड में होता है. उसमें बीन में अगर 5 मटेरियल है तो उसमें से एक निकलेगा, तो बीन लेवल पे इन्वेंट्री घटेगी या बढ़ेगी. दैट वी ऑल दिस थिंग्स एज अ माइक्रो लेवल मैनेजिंग इन ईडब्ल्यूएम. वी आर नॉट ईडब्ल्यूएम कंसल्टेंट, बट एटलीस्ट यू शुड नो what exactly EWM team is working on it. ठीक है, तो ये भी थोड़ा समझना जरूरी है. इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको उधर लेके जा रहा हूँ. बट यहाँ पे हमने एक लीन वेयर हाउस की तरह काम किया. जस्ट मैंने उठा लिया एक उस कमरे से कोई भी एक सामान जिसके लिए मुझे चाहिए. ठीक है, उठाने के बाद मैं पीजीआई कर. देखिए पीजीआई हो गया. अब पीजीआई होने के बाद देखिए मैं आपको इसका स्टॉक दिखाता हूँ. व्हाट वाज द लास्ट स्टॉक दैट यू हैव ऑब्जर्व? क्या था इसका लास्ट स्टॉक? इस मटेरियल का इस प्लांट के पास 1499 था, राइट? Mm. है ना? तो अभी कितना होगा, तो देखिए 1498. आप देख पा रहे हो? यानी कि एक मटेरियल मेरा इस सेल्स ऑर्डर में लग गया, इसके डिलीवरी में कंप्लीट हो गया. ओके. अब ये डिलीवरी में अगर आप देखोगे इसका, तो इसमें देखो डिलीवरी बना, इस डिलीवरी का पिकिंग हुआ और पीजीआई भी हो गया. पीजीआई को ही हम लोग बोलते हैं पोस्ट गुड रिसीव्स. ठीक है.
ये गुड्स इश्यूज होने के बाद मतलब ये हुआ कि हमने मटेरियल को ट्रक में रख दिया, और उस ट्रक जो है वो बिल्कुल प्लांट से निकलने के लिए गेट के पास खड़ा है। ठीक है। जब ये डिलीवरी बन गया, तो इस डिलीवरी के रेफरेंस में हमें वो जाएगा और बोलेगा कि मैं बाहर तो जा नहीं सकता, क्योंकि बाहर जाऊंगा तो जो है ट्रैफिक पुलिस वाले वो हमें रुकवाएंगे, वो हमसे बिल्टी मांगेंगे। तो आई कैन नॉट गो विदाउट इनवॉइसेस, तो आपको तो ये देना पड़ेगा, है ना। तो वो क्या करते हैं कि प्लांट से निकलने से पहले वहीं पे ऑफिस में इसका बिलिंग लेके जाते हैं, PF01 से हम बिलिंग बना रहे हैं। ठीक है। तो So ये what हम, you are using those codes? Sorry, Mukesh. So you are using that, right? VA01 and VF. So how do we know that codes and all? हाँ, कैसे ये जानते हैं, ये आप लोग को मैं बताऊंगा। ठीक है। जब आप लोग इसको रन करोगे ना, Hmm. तो अपने आप ही ये याद हो जाएगा। इट्स नॉट द, ये कुछ ज्यादा आपको परेशान नहीं करेगा, आई एम श्योर। लेकिन आप जब इसका स्टार्ट करोगे ना प्रैक्टिसिंग, तो आपको ये सब सब चीजें याद हो जाएंगी। तो बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि एवरी ट्रांजेक्शन्स मुझे याद है, नहीं। लेकिन जो बहुत फेमिलियर काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन्स है, वो आपको पता होनी चाहिए। जो बहुत कॉमन है O2C साइकिल में, वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं इसको प्रॉपरली करूंगा ना, आपको बताऊंगा, बताना स्टार्ट करूंगा, क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर ही नहीं मुझे बनाना है, बल्कि आपको पूरे ये कॉन्सेप्ट्स देने हैं। तो जब ये कॉन्सेप्ट्स आपको देंगे, तो आप जब भी इसको बनाना शुरू करोगे ना, देन वी इट विल बी स्टार्ट, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। ठीक है। मैं आप मैं ऐसा करूंगा, अभी मैं देख लेता हूँ कि S/4HANA में है या नहीं। अगर वो डेटा है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको ECC में कल क्या करूंगा कि एक एक को मैं अपना यूजर आईडी और पासवर्ड शेयर करूंगा। ECC में आप लोग एक तो ऑर्डर बनाना शुरू करोगे। जब आप ये बनाना शुरू करोगे ना, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस हो जाएगा। एंड इन अ सेम वे वी विल स्टार्ट वर्किंग इन S/4। ठीक है। तो अभी हम लोग इसका पहले बना लेते हैं। अभी O2C साइकिल कंप्लीट हुआ नहीं है, तो अभी, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं अभी, डिलीवरी तक पहुंचे हुए हैं, राइट। ये डिलीवरी है, ये डिलीवरी तक पहुंचे हुए। डिलीवरी बनने के बाद हम लोग इसका इनवाइस करेंगे। तो /VF01, ये सब सारी चीजें बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी। तो ये हमारा डिलीवरी है। अब ये डिलीवरी देखिए 43,000 का था। ठीक है। अब ये डिलीवरी से डिटेल्स उठ कर आ रहा है, कहाँ से उठ कर आ रहा है, कैसे उठ कर आ रहा है, ये सब सारी चीजें डिटेल में करेंगे। बट अभी आपको एज अ एंड यूजर क्या करते हैं वो समझना है। उसके बाद फिर मैं आपको धीरे धीरे इस पे बहुत सारी चीजें हैं जो जानने हैं। तो F2 से हम इसका इनवॉइस बनाना सुनते हैं। ये इनवॉइस बन गया, डिस्प्ले कर रहे हैं। और इसका पूरा थ्रू आउट हम क्या देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट फ्लो। ये है हमारा आइकॉन, जिसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट फ्लो। डॉक्यूमेंट फ्लो का मतलब ये होता है कि क्या क्या इस ऑर्डर के साथ क्या हुआ है, वो हम लोग पूरा थ्रू आउट देख सकते हैं। तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इस सेल्स ऑर्डर में ये मटेरियल है, एक क्वांटिटी है जिसका डिलीवरी ये बना है। सेम मटेरियल, राइट। इसका प्रोसीडिंग डॉक्यूमेंट ये है सेल्स ऑर्डर, इसका डिलीवरी डॉक्यूमेंट है। यही मटेरियल है, एक क्वांटिटी है। ठीक है। और इसके बाद, इस डिलीवरी के बाद इसका इनवॉइस बना है। सेम मटेरियल का इनवॉइसिंग हुआ है 43,000 का। और ये अकाउंटिंग जनरेट भी हो गया है। तो 43,000 का जो अकाउंटिंग जनरेट हुआ है, तो कस्टमर अकाउंट में डेबिटेड हुआ 43,000, और रेवेन्यू अकाउंट में ये क्रेडिटेड हुआ 43,000। मतलब 43,000 का क्रेडिटेड रेवेन्यू अकाउंट में हो, तो उससे वो एनालाइज करेंगे कि अच्छा, हमारा सेल्स इस GL अकाउंट में अभी तक कितना हुआ, कौन ऑफिसेस या कौन सेल्स ऑफिस हमारा अच्छा काम कर रहा है। ये सब सारी चीजें वो एनालाइज करते हैं, और उसी हिसाब से
सेल्स को पुश करते हैं। ठीक है, तो ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारा VA03 सेल्स ऑर्डर का कंप्लीटली डॉक्यूमेंट फ्लो में हमारा ये O2C साइकिल कंप्लीट होता है। और इसमें जितनी भी चीजें बनाए गए हैं वो हमने कॉन्फ़िगर किया है HIR कंपनी के लिए कि वो अपना बिजनेस रन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेल्स ऑर्डर का ये O2C साइकिल हुआ जो मैं यहाँ पे बता रहा था। सेल्स ऑर्डर बना, डिलीवरी बना, पिकिंग हुआ, पैकिंग। जरूरत नहीं है कि अगर वो मटेरियल नॉट रिलेवेंट फॉर पैकिंग है तो वो जरूरत नहीं है कि पैकिंग करने की जरूरत है, बट अगर पैकिंग मटेरियल होगा तो वो पैकिंग की जरूरत है। उसके बाद हमने PGI किया, फिर बिलिंग किया और अकाउंटिंग पोस्ट हुआ। तो दिस इज कॉल्ड O2C साइकिल। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं S/4HANA में कि S/4HANA में कोई डेटा इस तरीके से है जिसको आप लोग एक रेफरेंस के तौर पे बनाना शुरू करो, थोड़ा सा हैंड्स ऑन हो जाए और आपके अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाए। एंड ट्रस्ट मी, कुछ ही दिनों में आप इतने वेल वर्स्ड हो जाओगे कि आपको आपके अंदर एक खलबली सी मच जाएगी कि अच्छा ये मैंने कॉन्फ़िगर किया तो ये डिटेल्स क्यों नहीं आया, या कहाँ मैं मिस कर रहा हूँ। तो इस तरह का क्यूरियोसिटी अगर है आएगा तो समझिए कि आप रियली में सीख रहे हो, क्योंकि ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये प्रैक्टिकली जब आप सपोर्ट प्रोजेक्ट में भी रहोगे और वहां पे जब इंसिडेंट आएंगे और इस तरह के प्रॉब्लम जब ट्रबल शूट करना होगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि कहाँ आप कैसे किस तरीके से ट्रबल शूट करोगे। और इसी से रिलेवेंट क्वेश्चंस भी पूछते हैं जो इंटरव्यू में पूछते हैं कि अच्छा, व्हाट यू हैव डन इफ दिस प्रॉब्लम्स इज कमिंग, देन हाउ यू ट्रबल शूट लाइक दैट। तो इससे वो एक्चुअली देखना चाहते हैं कि आपको कितना एक्सपोजर मिला हुआ है या आप कितना जानते हो। इसलिए मैं ज्यादातर जो भी चीजें बताता हूँ वो थियोरेटिकली ज्यादा, उससे ज्यादा मैं प्रैक्टिकल में फोकस ज्यादा करना अच्छा समझता हूँ। तो इसलिए मैंने प्रैक्टिकल में आपको ये चीजें बताने की कोशिश की है कि आप जब इसको करने लगोगे तो आपके अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट और इंटरेस्ट बढ़ना शुरू हो जाए। तो अभी मैं ऐसा करता हूँ कि 24 के अंदर मैं देखता हूँ, और आप लोग भी ऐसे चेक कर सकते हो। ठीक है, 24 के अंदर मेरा ऑर्डर, सॉरी 24 के अंदर तो मेरा बना हुआ नहीं है ना, मेरा आईडी वीडी शेयर किया है या नहीं किया, इसलिए देखते हैं। पता नहीं है, डिटेल्स तो है। 24 में मुकेश 01 है। ओके, 24 में मुझे मुकेश 01 का मिला है। मैं C01 एक्सेस दिया हुआ है मुझे। आपका क्या था, MAN मनसा, ये था राइट, है ना? मैं आपका पासवर्ड रिसेट कर दे रहा हूँ, आप तो आपका पासवर्ड 123456 अगेन वही है। आप जब लॉगिन करोगे ना तो आपके पास वो पूछेगा यूजर आईडी और पासवर्ड चेंज करने का, आप चेंज करके अपने पास सेव रख सकते हो यूज करने के लिए। ओके, ओके। ठीक है। आपका अभी यूजर आईडी पासवर्ड चेंज मतलब पासवर्ड चेंज कर दिया है। आपका पासवर्ड 123456 इनिशियली है। आप जब यूज करोगे तो जैसे अभी मैंने सेट किया ना वैसे ही आपको भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं क्या देखना चाह रहा हूँ, SC16N में मैं टेबल लेवल पे देखना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कुछ डाटा ऐसा है जिसको मैं बना सकता हूँ। तो नंबर ऑफ एंट्रीज ऑलरेडी यहाँ पे बहुत कम है, 9 एंट्रीज है।
और इस 9 एंट्रीज में लेट मी गो दिस। ओके। और आप इसी डेटा से VA03, आपको मैं बताता हूँ कि कैसे क्या क्या करेंगे आप, है ना। VA03 में आप लोग जाइए और ये डेटा को यूज कीजिएगा। ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये सेल्स ऑर्डर क्रिएट करने का मैं बता देता हूँ। सेल्स ऑर्डर क्रिएट का, सेल्स ऑर्डर जब आप क्रिएट करेंगे तो क्रिएट करने का ट्रांजेक्शन होता है VA01, चेंज का होता है VA02, VA03 फॉर डिस्प्ले, डिलीवरी का होता है VL01N, VL02N, चेंज कर के लिए VL03N, डिस्प्ले के लिए। ठीक है। बिलिंग, बिलिंग के लिए हमारा ट्रांजेक्शन कोड होता है VF01 फॉर क्रिएट, VF02 फॉर चेंज, और VF03 फॉर चेंज। ओके। क्रिएट, चेंज, डिस्प्ले, याद रहेगा। ठीक है। तो आपने क्या किया, एक ऑर्डर ले लिया, ये ऑर्डर आप नोट कर लो। ठीक है। ये मैं आपको पिंग कर रहा हूँ जल्दी से आप। आ गया ये 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 ऑर्डर आप नोट कर लीजिए। ओके। अब इसी ऑर्डर से आप फिलहाल क्या बनाओगे, तो यहाँ देखिए ZOR है, HUS1 H1 HH, ये आप ध्यान में रखिएगा। ओके। ऑर्डर टाइप इज, ये आप VA03 से ये ऑर्डर खोल लीजिएगा, और पैरेलली एक ऐसा VA01 से आप ऐसा कीजिएगा। क्या, VA01। ओके। तो क्या कर रहे हो, ऑर्डर टाइप ZOR डालना। सेल्स एरिया, सेल्स एरिया कहलाता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और ये डिवीजन। तो ये क्या है, HUS1। ओके। ये H1 और ये HH, याद रहेगा। ये खोल लोगे ना आप पैरेलली, तो आप डिटेलिंग डाल के आप इसको करना। ठीक है। दूसरा, आप यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे सोल टू पार्टी, इससे कॉपी करो, सेम सोल टू पार्टी अभी डाल के आप सिर्फ सेल्स ऑर्डर बनाने की कोशिश कीजिए। This information we will get from where? अरे ना, You are copying all those codes and all these things. This information where we did get that? विच वन, ये दिस वन, Yeah. Yes. VA03। सी, यू कैन गो एट द टेबल लेवल। Okay. ठीक है। टेबल लेवल पे SC69 ट्रांजेक्शन जाएंगे। राइट। यहाँ पर आप इसको टेबल लेवल पे, आप मैं लिख रहा हूँ ये टेबल लेवल पे। ओके। टेबल लेवल पे जाइए, कैसे जाएंगे, SC69, और यहाँ पे टेबल का कौन सा डालोगे, VBA के। अब बताऊंगा आपको सब कुछ कि VBA के क्यों डाल रहा हूँ, क्या किस तरह का डाटा होता है। ठीक है। VBA के डाल दिया, और VBA के में डालकर आपने क्या किया, यहाँ पे VBA के डाल दिया, VBA के। राइट। और यहाँ पे अभी एंट्री कुछ है ही नहीं, 9 एंट्रीज, सॉरी ये ECC का है, ये मेरा इस पर आना है। तो यहाँ पे क्या है, SC16 है। राइट। VBA के में एंट्रीज बहुत कम है, 9 एंट्रीज है। तो आप क्या करना, सीधा ये VBA के डाल के ऐसे इंटर कर देना, तो आपको ये ऑर्डर कुछ दिखेगा जो सबसे पुराना है, 20/11/2000 इसका बना हुआ है। तो ये ऑर्डर लेकर VA03 में जाना। राइट। VA03 में गए,
VA03 क्या है? डिस्प्ले है, राइट? VA03 डिस्प्ले, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है। VA03 डिस्प्ले, ये चेंज का है, ये क्रिएट का है। ठीक है, तो यहाँ पर आप डिस्प्ले किए, ये आपका ऑर्डर खुल गया। अब इस ऑर्डर से आप हेडर में गए, ऑर्डर टाइप ZOR, और ये सब है सेल्स एरिया। तो सेम जब आप यहाँ पर डालोगे VA01 में, तो यहाँ पर आपको ZOR डालना पड़ेगा। ठीक है, और ये डालने पड़ेंगे HUS1, H1 और HH। ठीक है, क्योंकि ये आपने इससे रेफरेंस में लेके बनाया, आप कुछ और भी डालोगे तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि डेटा है नहीं। और यही डाटा नहीं होने की वजह से मुझे ECC में जाकर आपको बताने पड़े। ठीक है, तो आप यहाँ पर ऑर्डर बनाना, कुछ भी यहाँ पे डाल दीजिए। राइट, यहाँ पे डाल दिया और आपने एंटर मारा। ठीक है, अरे ये क्या है? अच्छा, जनाब नहीं है, ये आपका कस्टमर भी नहीं है। ठीक है, ये आपका कस्टमर भी नहीं है। ओके, वेरी स्ट्रेंज। इसमें डेटा 41, ये है नहीं, कस्टमर है नहीं एग्जैक्टली। ठीक है, ये कस्टमर नहीं है, ये कस्टमर नहीं है, ये प्रोस्पेक्ट्स है एक्चुअली। ठीक है, ये प्रोस्पेक्ट्स है, इसलिए ले नहीं रहे। तो हमें वो सब कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे हमें, धीरे धीरे आप सब सीखेंगे। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं ऐसा करता हूँ। और पुराना डेटा है, इसमें कोई कस्टमर भी बनाया है या नहीं बनाया है? इसमें तो बहुत सारे कस्टमर दिख रहे हैं मुझे। लेट्स चेक दिस कस्टमर। मेरा इसमें था पुराना, इसमें नहीं है शायद। ओके, इस सवाल में नहीं दिखता हूँ मैं ये यार। Okay. नहीं, ये भी नहीं है। ओके, C16 है। कोई बात नहीं, मैं दूसरे वे में करता हूँ। KNVV, नंबर फॉर एंट्रीज 12 एंट्री है। ये कस्टमर डाल के देखेंगे, 9 वाला। तो मैं VA01 सब कुछ मैंने, अच्छा ये ECC है यार, Yeah. ECC है, इसको बंद ही करता हूँ। लेट मी गो, VA01 सेम डाला। ये भी कस्टमर सही है या नहीं चेक करना पड़ेगा, पता नहीं ये कस्टमर बनाया नहीं। नहीं, ये भी कस्टमर नहीं है इसका। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग अ, इसको सेट करते हैं। ठीक है, अभी फिलहाल आप इसको थोड़ा रिवीजन कर लीजिए। Yeah. राइट, ECC में डेटा है बट यहाँ पे है नहीं, हमें ये बिल्कुल नए सिरे से करने पड़ेंगे सब। No, so ठीक how है, you are getting that that customer is not there? इट्स बिकॉज इट्स नॉट कॉन्फ़िगर्ड एक्चुअली, Okay. अदरवाइज Maybe इट शुड बी config. एक्सेप्टेड। या, Okay. Okay. so if I go with BP, so here the differences in ECC and S/4HANA is the business partner concept. Initially, we are actually giving the concept. We will have the concept of business partner. So this is the normal business partner. That business partner could be anyone, right? Those who are associated with the business are called the business partner. But those who are not uh, necessary that every business partner will be the customer. No, few may be acting as like a customer. So customer is the one who is having the soul to
party kind of authorizations or giving the some privileges to them, तब वो कस्टमर बनता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो वो है नहीं। तो इसके लिए हमारे पास जो है ये कॉन्सेप्ट एस फोर हाना में है, तो हमें थोड़ा इस पे वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज दिस सिस्टम्स इज नॉट हैविंग एनी, सी, दैट इज व्हाट आई वाज टेलिंग। ये है ही नहीं अभी। ठीक है, ये बहुत पुराना डेटा है और रिसेंट में कोई डेटा है नहीं। तो हमें बिल्कुल नए सिरे से बनाने पड़ेंगे, हमें बिल्कुल नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। जो जो भी इसमें डाटा है, यू कैन सी दिस आर ऑल 2023 क्रिएटेड, बट इट इज नॉट रिलेवेंट एट ऑल। ओके। तो हम लोगों को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने पड़ेंगे। लेकिन आप लोग फिलहाल ऐसा कर सकते हो कि इसी में आप लोग ट्राई कर सकते हो, या फिर मैं ऐसा करता हूँ कि कल का सेशन में रखता हूँ, हर एक को मैं अपना यूजर आईडी पासवर्ड ईसीसी का दूंगा और उनसे O2C साइकिल कंप्लीट करवाऊँ। ठीक है, मैं देखकर एक ईसीसी का साइकिल वो कंप्लीट करवाऊंगा, ताकि आप थोड़े से फेमिलियर हो जाओ। उसके बाद मैं यहाँ पर S4 में सारा कॉन्फ़िगरेशन शुरू करूँ। ठीक है, अभी हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है S4 हाना में डेटा जिससे मैं प्रोसेस कर पाऊँ। ठीक है, हम्म। जैसे कि मैंने ईसीसी में किया था, राइट। तो यहाँ पर वो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो भी डिटेल्स यहाँ पे डाल रहा हूँ मैं, इट्स नथिंग क्रिएटेड एज अ कस्टमर हियर। ओके, इफ आई इट इज गो नॉट। एंड सी, इट्स नॉट क्रिएटेड एट ऑल फॉर द कस्टमर। ओके। ठीक है, तो उसके लिए हमें ये अगर हम ये डालते भी हैं 9, ये सब बना हुआ है, बट इफ आई गो एंड सी, लेट्स, इट्स नॉट कंसिडरिंग, हम्म। क्योंकि ये प्रॉपरली दिया हुआ नहीं है, उसको एक्सटेंड नहीं किया हुआ है। ठीक है, तो वन टाइम कस्टमर बना हुआ है, इट्स नॉट द कस्टमर, राइट। तो हमें ये सब करने पड़ेंगे। ये बिल्कुल अच्छा है। सबसे बड़ी बात है कि ये बिल्कुल सिस्टम कोरा है, मतलब इसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें नहीं है इस सर्वर में। तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलेगा सही तरीके से काम करने का। ठीक है, तो हम लोग करेंगे कल से। हम्म। मैं अपना ईसीसी का आपको यूजर आईडी पासवर्ड शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन को देखूंगा और सभी से आपको एक एक करवाऊं। ओके। ठीक है, ताकि आप लोग थोड़ा सा वेल वर्स्ड हो जाओ। फिलहाल आप ये रिकॉर्डिंग में देखिए कि मैंने O2C साइकिल कैसे चलाया। हम्म। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा फेमिलियरिटी बढ़ जाएगी और फिर आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। अभी बहुत सारी चीजें हैं, दिस इज जस्ट अ फर्स्ट क्लास, राइट। बट ट्रस्ट मी, आफ्टर फ्यू डेज यू विल सी दैट नो, आपके अंदर जो डिफरेंसेस और कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही अच्छा हो जाए। ठीक है, या। तो उसके लिए आप निश्चिंत रहे। बट यस, जो भी चीजें हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, कोशिश कीजिए कि टाइम निकाल कर आप लोग उसको प्रैक्टिस जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। ओके। आई नो दैट यू आर सो बिजी एंड सीखना भी है और जॉब भी करना है, इट्स टफ, बट थोड़े करने पड़ेंगे, है ना। या। तो इस सिस्टम में मेरे पास ऐसा भी कुछ है नहीं, हमें पूरे नए सिरे से सब कुछ करना पड़ेगा। बट ईसीसी में आप लोग फिलहाल जो है कर सकते हो। ठीक है, इफ यू वांट, आई विल शेयर विथ यू दैट पासवर्ड टू यू, और ईसीसी में मैं एक यूजर आईडी पासवर्ड बोल देता हूँ उनको एक देने के लिए। ठीक है, ताकि आप उस पर थोड़ा सा एक हैंड्स ऑन कर सको। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे पूरे स्क्रैप से, राइट। आई एम स्टॉपिंग इट टूडेज क्लासेस। और हाँ, मैं एक चीज और भी बोलना चाह रहा था, क्योंकि मंडे से ना हम्म। आई विल स्टार्ट इट ऑन 11 AM। आई थिंक दैट विल बी मोर कन्वीनियंट फॉर यू ऑल, राइट। तो मंडे से हम लोग 11 बजे शुरू करेंगे। ओके। ठीक है, 11 to 1 रखेंगे। बट अभी 11:30 ही ज्वाइन करेंगे फ्यू डेज, राइट। तो हम लोग इसमें मंडे से 11 कल हम लोग ज्वाइन करेंगे 11:30। तो रिकॉर्डिंग देखिए एक बार,
और थोड़ा-सा देखने की कोशिश कीजिए कि कैसे ओटीसी साइकिल चल रहा है, क्योंकि ये जो ओटीसी साइकिल है वो एंड यूज़र करते हैं। आपको पहले समझना पड़ेगा कि एंड यूज़र क्या करते हैं, व्हाट यू आर गोइंग टू डिलीवर फॉर देम, राइट? जब ये समझ जाएंगे देन वी विल स्टार्ट टू वर्किंग ऑन इट, द वेरिफिकेशन पार्ट।